This is the time to set equations of life right. The phone was ringing. I was getting irritated. And when I created that irritation, because of someone else forgetting to put their phone on silence, color of my circle changed because of somebody else's phone ringing. कितनी छोटी चीज के लिए सर्कल बदल गया. बदला बदला. क्या ये जीवन की बहुत बड़ी बात थी? नहीं थी. अगर सारा दिन की इतनी छोटी बातों में सर्कल बदलेगा तो शाम तक क्या हो जाएगा? शाम तक क्या हो? दिस इज व्हाट इज ध्यान रखना. दिस इज केयरफुल. कोई और उसने फोन बंद करना भूल गए. मेरा सर्कल. This is who I am. If I am going to allow this to get colored by such small scenes, then I will not be able to keep it white. And when the color will change, I will say, किसकी गलती? किसकी गलती? And इसलिए हम मुड़कर उनकी तरफ ऐसा देख. मतलब जल्दी करो, मेरा सर्कल खराब हो रहा है. Yes. Yes. How can we ever look at somebody else? Because the minute I do that, I have just conveyed a message to them. You are controlling my mind right now. And please change so that my mind becomes stable and happy. Getting disturbed is one thing. And second thing is blaming somebody else for the disturbance. Those are two different things. दोनों में फर्क है ना? Phone rang, situation. I got disturbed, emotion. Fine. लेकिन third thing is I blame you for my disturbance. True? 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 When I get disturbed, power gets depleted. But when I blame somebody else for my disturbance, battery goes. Why? Why? Because I'm saying, now when your phone stops ringing, then I will be fine. If your phone rings, I get disturbed, it's okay. As long as I say to myself, who is creating this disturbance? Answer. Who's creating this disturbance? Phone baja, I got disturbed. I have to ask my mind, who is creating this disturbance? Me. कितनी देर रहना है disturbed? जब तक फोन नहीं ठीक होता. Phone rang. I got disturbed. Who created this disturbance? दो आंसर है. फोन की वजह से मैं डिस्टर्ब हुई. वन आंसर. दूसरा, मैंने कुछ ऐसी थॉट्स क्रिएट की जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हुई. विच इज द आंसर? सेकेंड. तो अगर द आंसर इज मैंने कुछ ऐसा सोचा जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हुई, तो हु इज द क्रिएटर ऑफ द डिस्टर्बेंस? आई. तो कितनी देर डिस्टर्ब रहना है? कितनी देर? तो देखना किसकी तरफ था? उनकी तरफ या अपनी तरफ? अगर हमने उनकी तरफ देखा तो वी आर ट्राइंग टू से जल्दी बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है. एंड अगर आज ये किया तो सारा दिन जीवन में हर सीन में यही कह रहे,
दूसरों की तरफ देखकर बोलते हैं, बदल जाओ, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड. बदल जाओ, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड. बदल जाओ, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड. And when I keep living my life that way, I cannot keep my circle wide. Because it means, please be my way for me to be stable and happy. And जो ऐसे खड़ा है, उसका circle, जिनका circle white है, उनका हाथ कैसे है? जिनका सर्कल वाइट है, उनका हाथ कैसे है? और जो ऐसे खड़े होंगे फिर उनका सर्कल कैसा होगा? देवियों की पूजा करते हैं ना, कितना लर्न करना चाहिए उधर से कि सर्कल वाइट है और हाथ ऐसे है. विच मीन्स जो ऐसे होगा, दे रहा है, उसका सर्कल वाइट है. अब मुझे सारा दिन चेक करना है, आई एम गिविंग or I'm asking. Asking means asking the world and people to be my way for me to be happy. Situations and state of mind is connected, right? Right? Situations and state of mind is connected, right? Situations and state of mind is connected, yes or no? Okay, phone ringing, situation, mind, connected, yes or no? Again, phone ringing, situation, state of mind, option. Give me different options if the phone rings. What all is possible? Get disturbed, 1, get angry, 2, 3, no difference at all. 4th, compassion, it's okay, band karna, bhool gaye. And 5th, no thought at all. Possible? Possible? Okay. ये सारी options dependent on my mind or dependent on the phone ringtone? Situation, my mind. Connected? Yes, no, sometimes. Situation, अच्छा mixed मतलब थोड़ा connected, थोड़ा not. Mixed मतलब क्या? This is the most important equation for life. ये equation clear हो गई, happy always. Situation, state of mind. आंसर सिर्फ यस और नो में चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए अभी, सिर्फ यस नो. ज्ञान है, आंसर चाहिए यस नो. सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड, कनेक्ट. अब इस सिचुएशन में से फोन रिंगिंग को हटाओ और अपने जीवन की सिचुएशन रखते जाओ. फॉर्मूला सेम है, सिचुएशन कोई भी हो. It can be as small as a phone ringing. It can be as big to a sudden death in your family. Situation. It could be an illness. It could be a business crisis. It could be a relationship issue. It could be just an addiction. It could be anything. Situation. This side. State of mind. This side. Unaware. Dependency. Weak soul. जीवन ऐसे जीती है, saying जैसी situation वैसा state of mind.
एंड फिर हम कहते हैं बात ऐसी थी तो बुरा तो लगना ही था, बात ऐसी थी तो गुस्सा तो आना ही था, बात ऐसी थी तो डर तो लगना ही था। और आसपास के लोग बोलते ऑब्वियसली डर तो लगना ही था। ऐसा ही करते हैं ना हम। हाँ, विच मीन्स एवरी टाइम वी आर सेइंग बात ऐसी होगी तो इमोशन ऐसी होगी। एंड तब क्योंकि बातें कई हमारे जीवन में फेवरेबल नहीं आई और हमने कहा जैसी सिचुएशन वैसा स्टेट ऑफ माइंड, सो सिचुएशन स्टार्टेड अफेक्टिंग स्टेट ऑफ माइंड। कलयुग है, कलयुग में भी घोर कलयुग है। तो जो ये वाला साइड है इसमें बहुत कुछ हो रहा है सारा दिन, राइट? Situation. And if I create this equation that situation is connected to state of mind, तो अगर situation कलयुग है तो state of mind भी कलयुग है, and which means कलयुग में प्रॉब्लम है तो स्टेट ऑफ माइंड में दुख है, कलह है, कलेश है, उदासी है, नाराजगी है। नाउ प्लीज टेल मी इफ इट इज पॉसिबल कि सिचुएशन कलयुग है और स्टेट ऑफ माइंड सतयुग है। The vibration of the room has changed. Yeah. Do you feel the energy of the room change? Yeah. Energy changes so fast with just one thought. सिचुएशन कलयुग है, स्टेट ऑफ माइंड सतयुग है। ओके, डिफरेंट। सिचुएशन सतयुग है, हैव यू एवर मेट समबडी हुज लाइफ इज परफेक्ट बट दे आर नॉट हैप्पी? वो हर चीज़ में कुछ प्रॉब्लम, कुछ नुक्स, कुछ ना कुछ गलती ढूंढ लेते हैं। एवर मेट एनीबडी लाइक दिस? यस। एंड व्हेन यू लुक एट दिस पर्सन एंड यू से सब कुछ इनके जीवन में अच्छा है, फिर भी इनको कुछ ना कुछ दिख जाता है। दे आर अ प्रूफ दैट सिचुएशन हैज नथिंग टू डू विद स्टेट ऑफ माइंड। Situation has nothing to do with state of mind. The situation is perfect for them, but state of mind is. तो अगर परफेक्ट सिचुएशन में कोई नेगेटिव ढूंढ सकता है तो नेगेटिव सिचुएशन में कोई परफेक्ट रह सकता है? यस। नाउ कलयुग सिचुएशन, सतयुग स्टेट ऑफ माइंड। Possible? Kalyug situation, Satyug state of mind. People walking across the hall don't disturb us because we do not allow them to affect our state of mind. We are choosing to get disturbed. Please remember, your circle color is changing. वाइट कलर का ध्यान रखना इतना इजी नहीं है, ध्यान रखना पड़ता है पूरा दिन। जस्ट वेयर वाइट कलर क्लोथ्स वन डे एंड सी के पूरा दिन कितना ध्यान रखना पड़ता है। कुर्सी पर बैठने से पहले कुर्सी चेक करनी पड़ती है। Yes, you have to, because if you don't, then by the end of the day you have lot of stains on what you're wearing. Similarly, wherever you are, the energy, you have to take care that your energy influences, not you get influenced by energy. Kalyug situation, Satyug state of mind. Possible? Difficult? Never mind. Possible? क्यों उसको difficult बोल के? पॉसिबल बोलते तो अच्छा फीलिंग आता है, डिफिकल्ट बोलते हैं तो एवरी वर्ड, द माइंड इज लाइक अ चाइल्ड। बी केयरफुल हाउ यू टॉक टू द चाइल्ड। आप जैसे उससे बात करेंगे
वो बिल्कुल वैसा ही बनता जाएगा। आप अपने मन को कहो बहुत डिफिकल्ट, तो कहेगा हाँ। आप उसको कहो बहुत इजी आप कर सकते हो, कहेगा हाँ। जस्ट रिमेंबर वो छोटा सा बच्चा जिसको आप एक एक चीज़ सिखा के बड़ा करते हो, अगर आपने वो छोटे से बच्चे को कहा होता ये सब कुछ सीखना बहुत डिफ़िकल्ट, तुम कभी नहीं सीख सकोगे, तो वो कभी नहीं सीखता। लेकिन उस छोटे से बच्चे को आपने पूरी दुनिया की बातें सिखा दी। कैसे सिखाई? कैसे सिखाई? छोटा छोटा, ये टेबल है, ये सोफ़ा है, ये फ्लावर है, ये कारपेट है। थोड़े दिन में उसने सब कुछ सीख लिया। कैसे सीखा? हमने उसको सिखाया। इसको भी सिखाना है कैसे सोचना है। हमने इसको सिखा दिया कि जैसी सिचुएशन वैसे तुम, तो ये आज्ञाकारी है, ये बिल्कुल वैसा ही करेगा, ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। आज इसको एक नई चीज़ सिखाते हैं। सिचुएशन वहाँ है, हम कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। वहाँ जो हो रहा है वो वहाँ की एनर्जी है, यहाँ जो क्रिएट करना है वो किसकी चॉइस है? हमारी। वहाँ फ़ोन बज रहा है, वो वहाँ बज रहा है, यहाँ क्या बजाना किसकी चॉइस है? The mind will learn it. And after that, guarantee, wherever you are in the world, let anyone's phone ring, your mind will not create a single thought. If you tell it once कि phone ringing has nothing to do with you, उसके बाद वो कभी थॉट नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन आज अगर आपने अपने मन को ये कहा, कैसे फ़ोन बजा, समझ में नहीं आते, प्रोग्राम में बैठे ऐसे कैसे फ़ोन बजा, तो इरिटेट होना तो बनता ही ओ बाबा, इरिटेट होना तो बनता ही है। ओ, तो फिर आपका मन आपका सबसे आज्ञाकारी बच्चा है। और उसके बाद आप सारी दुनिया में जहाँ भी होंगे, जब भी किसी का फ़ोन बजेगा, ये ओबीडियंटली इरिटेट होगा उस टाइम। टीचिंग आवर माइंड हाउ टू बी। You only have to teach it once, and after that it obeys always. Now we need to teach it once and for all today that situation has nothing to do with what I create here. Situation, stuck in a traffic jam, getting late for flight, state of mind. You know why I said this? Because it happened to me this morning. Come on, situation, stuck in a traffic jam, late for the airport, state of mind. Satyug thought. There are two sides. We have to keep one thing here, choose what is the next thing here. Every time I say to myself, obviously tension होगी, तो हर टाइम टेंशन होगी। लेट मी टेल माई माइंड अनदर लैंग्वेज, स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, लेट फॉर द एयरपोर्ट, स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, लेट इट गो वॉट? लेट इट गो नहीं, लेट वॉट गो? स्टेट ऑफ माइंड, स्टेबल, काम, व्हाट एल्स? पीस। इट्स ओके, पहुंच जाएंगे। यस। और अगर नहीं भी पहुंचे तो अगली फ्लाइट ले लेंगे। लेकिन जीवन की हर सिचुएशन में अगर सर्कल का कलर चेंज हो गया तो पहुंच तो जाएंगे, लेकिन काले सर्कल के साथ पहुंचेंगे। प्रायोरिटी ऑफ लाइफ, प्रायोरिटी क्या है? वी ऑलवेज वॉन्टेड एवरीथिंग आउटसाइड टू बी परफेक्ट, but everything outside cannot be perfect. But there's only one thing which can be perfect, and that one thing is, तो दो चीजें हैं, एक है परिस्थिति, एक है स्व की स्थिति, राइट?
my state of mind. My equation in life became जैसी परिस्थिति वैसी मेरी मन की स्थिति. तो परिस्थिति हिली, मैं भी हिली, फिर परिस्थिति हिली, मैं भी हिली. तो मेरी खुशी सारा दिन में क्या होती गई. और फिर क्योंकि सिचुएशन हर थोड़ी देर के बाद आती गई, ये हर थोड़ी देर के बाद हिलता गया, तो थोड़े दिन के बाद हमें लगा स्ट्रेस इज नेचुरल.